अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KPN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल मुमताज कॉम्प्लेक्स मेहदीपट्टनम का फिल्म एक्टर अदा शर्मा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। तकरीब इफ्तिताह में डॉक्टर गौरव अरोरा, रीजनल हेड क्लिनिकल सर्विसेज डॉक्टर M वंशीधर क्लिनिकल सर्विसेज के अलावा दीगर मौजूद मेहमानों ने शिरकत की। इस मौके पर दवाखाने में इलाज से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। जिम्मेदार दवाखाने ने बताया कि दवाखाने को जदीद तरीन असरी आलात, मिशनरी व दीगर अहम ज़रूरी बुनियादी सहूलतों से लैस किया गया ताकि मुकामी और गैर मुकामी मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा पहुँचाया जा सके। इस दौरान अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरा बैक है इधर पूरा वन सेकंड डॉक्टर वंशी राज, डॉक्टर गौरव अरोरा, डॉक्टर बल्कि सत्या प्रसाद, प्लीज कैमरा डॉक्टर वंशी, डॉक्टर गौरव सिंधुरा, प्लीज ज्वाइन What a beautiful location and the 7th center in Telangana and 95 in all over India, Dr. Agarwal. అరే ఇక్కడ మీరు ఏం నాకు అర్థం स्ट्रेट कैमरा It's in 2010 when we planned to have our Hawaii hospital in Hyderabad. And as you know, the Agarwals is always known globally in 16 countries. I hope that this hospital will be a boon for the area around, for the public, as we all have a Let's begin with the challenge. Remember, the one who blinks first loses. Ready? Go. Wait. Please be honest if you blink, because I cannot see. I'm blind. Right now, it doesn't matter who wins, but I'm glad you took this challenge. And I hope you will not blink at the thought of donating your eyes for someone like me. What a beautiful initiative. this side also. Sir, this side. So much, ma'am, once again for coming here. And next, let's have a selfie at this grand inauguration of Dr. Agarwal's Eye Hospital, Mehendipatnam. Allow this. Sir, ma'am.
Wonderful. I'm happy to be here so I can create some awareness. So I want to tell all of you, we take it for granted that we can see because we can. And you realize only when maybe a little piece of dirt goes in your eye and you're thinking about it till it gets out. It's a small little piece of dirt and you think about it all day. But for people who can't see, I have friends who are visually impaired. And I know how, that's a sense that we take really for granted because we assume, I saw that, I didn't like it, I saw this, I liked it, it's nice. Because that's something that we see. We watch movies, we watch actresses, we judge people on their external appearances because we can see them. So you say she's very beautiful because you see externally she looks very nice. You don't really know about her because that's what you see. But the sense of sight is really, really important. And because I'm here today, I would like to say I have pledged my eyes. I think it's a really it's so nice that you can, after you die, you can still continue to live and you can give somebody else vision. Someone else can continue to live with your eyes. I think that's such a beautiful thing. I think you should all pledge your eyes because after you're dying, imagine you can give somebody else life. And like doctor said, it's not just one person, it's 2 and 4 people also. So imagine if 4 people can continue living even after you die. I think that's a really beautiful thing. And I would, whoever's watching this, whoever's here, I hope I could have inspired you a bit to have wanted to do that yourselves. So please do. Thank you. Yeah, thank you so much. A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।